Hello everyone, welcome to our episode. We are Boys in Blues and we are here to talk about our beloved club, Manchester City. And आज का episode is all about City, talking about some कोई तो मैच हुआ था अभी एक जिसमें एक प्लेट मिली थी, कोई तो स्टील की प्लेट मिली थी, तो जिसके लिए कुछ फैंस बहुत खुश हो रहे थे। तो यार चेक कर मतलब जानना चाहता हूँ अपने भाई लोगों का क्या राय है उस बारे में। आई एम जॉइंड विद माय फेलो सिटीजंस तन्मय भाई, समीर भाई, कैसे हो यार? कैसे थे लास्ट 24 घंटे? समझ में नहीं आ रहा था कि पेशेंट की उल्टी पे ध्यान दूं या अपने प्लेयर्स की उल्टी पे ध्यान दूं। भाई अगर जो लोग कम्युनिटी शील्ड को बहुत सीरियसली लेते हैं वो तो सीजन खत्म हो गया होगा उनके लिए तो भाई हो गया। हाँ, सीजन खत्म जिस हिसाब से आर्टेटा सेलिब्रेट कर रहा था उससे तो लग ही रहा था कि कम्युनिटी शील्ड ही इनकी सबसे ज्यादा। आर्टेटा तो भाई नूनेस को ट्रिब्यूट दे रहा था, वो the way he was holding his medal भाई, ये तो प्रॉपर मुझे पता नहीं क्या फिर क्या हुआ था इसके बाद लास्ट सीजन उसके साथ क्या हुआ था। पिछली बार हालैंड ने बार पे मारा था और फिर उसने बार ही तोड़ दिया था। इस बार डी ब्रुयने ने बार पे मारा है तो फिर we know we can expect something, but in observation भाई, calm before it's eventually community shield and we are a community team. हम community के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आर्सेनल को थोड़ा जीतने दे दिया। I think eventually we did a good thing. कम्युनिटी शील्ड का बहुत सिंपल सा रूल है, जीते तो ट्रॉफी नहीं तो ग्लोरीफाइड फ्रेंडली। मतलब कल जाके अपना प्रीसीजन खत्म हुआ है, फाइनली अपना प्रीसीजन खत्म हुआ है, अपना सीजन चालू होगा फ्राइडे को। That's we all know that. But to add to this, Arsenal is acting like as if they won something to come into the community shield. वो तो किसी तरह सेकंड आ गए। हम तो सारा लेके चले ही गए थे, वो तो किसी तरह सेकंड आ गए। That's why they were in the community shield game. भाई basically वो angry Randman जिस passion, जिस commitment, जिस dedication भाई आर्सेनल को वो दिखा रही थी। And to top it all, अगर देखा जाए तो ठीक है, आर्सेनल को अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, उनको एक कह सकते हैं कि कहा जाए कि चलो तुमने हमारा सेक्टूबल करने से रोक लिया, चलो जस्ट हैव दैट प्राइड। यस, अगर तो वैसे भी उनको स्पिरिचुअल ट्रॉफीज उठाने की आदत तो है, ये सब करने की भाई मतलब ये उनकी मतलब दे आर एडिक्टेड टू हैविंग दोस मेकशिफ्ट ट्रॉफीज इन देयर नेम, ठीक है ना, कि हम लोग पुट प्रेशर ऑन यू, वी हैड अ प्रेशर ऑन योर ट्रॉफी। या प्रेशर एफसी, प्रेशर कुकर एफसी। नहीं, प्रीमियर लीग चैंपियंस फॉर 247 days. That should be the real. That's also a good trophy. I mean, yeah, we should respect that. ठीक है भाई, congratulations to Rice Baby FC. Arsenal fans ऐसा celebrate कर रहे थे sextuple रोकने के लिए। I'm like Arsenal fans celebrating like stopping sextuple just like a broke guy, bantering some Ferrari guy for not having Rolex. वैसी बात होगी भाई। बच्चों तू पहले तेरा मारुति सुजुकी तो ले, पहले तेरा टाइटल खरीद तो ले, फिर हम पे बैंटर कर भाई। First you do something and then like we stop the sextuple. I'm like bro, chill out. It's fine, it happens. क्या है, किसी बहुत ही सिद्ध आदमी ने कहा था, छोटा लड़का गुंडाई करता है, करने दो, हमारा क्या You would like to give a shout outs to Mr. Ramadhir Singh. But एक चीज है, I really want everyone to raise their hand, especially in this finger. I want everyone to do this. Yes, in name of. Okay. और एक चीज, just follow me in, to every Arsenal fan who ever gets to watch this, you must this season you must चलो भाई, अपन बैंटर करने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा भाई, और इस लगेगा कि अपन बहुत सोर लूजर टाइप कर रहे हैं, बट ठीक है, लेट्स गेट आउट टू द गेम। Let's it's heartbreaking. I mean, just मेरे को नींद नहीं आई है मैच। बिल्कुल, मतलब सीजन खत्म हो गया भाई, मेरे लिए सीजन खत्म। अब तो वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई। क्लब को एडमिनिस्ट्रेशन में जाने दो। Dissolve the club. Let's go to League 2. We want charges back.
So let's get back to the Sack everyone. so so why let's talk about the game. Sack the statues. So भाई तन्ना Sack भाई everyone. ओवरऑल क्या क्या रहा है आपका गेम का ओवरऑल रिव्यू कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गुड टू सी अ कंपैरेटिव गेम. इट वाज नॉट एज ऑफ अ गुड गेम आई एक्सपेक्टेड कि एकदम अच्छा हेड टू हेड होगा, बट ठीक है. आफ्टर लॉन्ग टाइम सॉ वन गेम, तो आपका कैसा कैसा ख्याल था? व्हाट वाज योर थॉट्स ऑन द गेम? यार देखा जाए तो हाउ आर्सेनल वाज प्लेइंग इन द फर्स्ट हाफ, they were dominating the play. They were creating much more chances. I don't think so Ramsdale even had an opportunity against us in the first half. But वही है अब, call it game rust, call it too much break, वो कुछ भी कह सकते हैं. But हाँ, there were slight concerns in the midfield and in the defense. But फिर वही बात है कि इतनी जल्दी इस चीज पे या concerned होना टू seems अर्ली to टू be a जज. little premature. Yeah, it's too premature to think कि हाँ we're not in the right direction. Uh, या I think the only defensive errors that I saw were, other than the goal that happened, was I don't think Akanji was playing up to the mark. या Stones was playing well. Walker के crossing भाई ना ही करे तो अच्छा है. वो वो ग्राउंड पासेस पे ही रहे, अपना भागा दौड़े करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई. क्रॉसिंग की ट्राई ना करे, उसके क्रॉस उठते नहीं है कभी. स्काई करता है मैं सीधा. इतने इतने अच्छे पोजीशंस पे वॉकर होने के बाद भी मेरे को लगा यार ये क्रॉस ना करे, बस चलो अंदर घुसने की कोशिश करे, क्रॉस ना करे. वो जैसे ही क्रॉस करता था, बॉल या तो सलीबा के पास पहुंच रही है या बेन वाइट के पास पहुंच रही है, पर अपने प्लेयर के हाँ. पास नहीं पहुंची कभी भी. हालैंड तो पूरा टाइम ऐसे ही देख रहा था भाई. हालैंड वाज लाइक ब्रो कहां डाल रहा है तू बॉल? हालैंड का बॉल कहाँ है? अरे पहले ही रुक गई. Haaland was like Guardiola, please, like please, 5 days, please. And again, I saw a lot of people talking about how Haaland was not playing well and how Haaland was not adding to the game. But what they didn't see was Haaland was literally playing inside our own half at one point. या वो बहुत प्रेस पीछे कर आ रहा रहा है, था वो. बॉल देने की कोशिश कर रहा है. And even on the ball movement of his, earlier his on the ball movement was just used to be like muscling out the players and just try to score the goal. But मैंने देखा है वो बंदा ड्रिबल कर रहा है, वो बंदा फेक कर रहा है. फेक कर रहा He's improving, he's evolving, and to है. या to make a player like this evolve into something much better will take time. It's like you're already reached a top potential of someone who will probably take like 15 years to come to this. पर अब उससे ऊपर भी जाना है. You have to यस. make this person become one of the best in the world of all time, not just या one season. तो उसमें तुम्हें टाइम लगेगा. You have to see multiple opportunities. You have to see multiple formations. अब जैसे इस बार पेप ने क्या किया, पेप ने इस बार अल्वारेज हालैंड दोनों को खिलाया. Could be a start of something new. See, हो सकता है. Alvarez not only अपना his, I feel his size is a very big misnomer. वो जितना लगता है fragile, उससे ज्यादा वो tough है, उससे ज्यादा stiff है. He can keep the ball, he can push the players away. उसका pace attack अच्छा है, and it's just that's what makes him the player to like start. पर अब वही बात है कि are we gonna get better, और या फिर ये कम्युनिटी शील्ड के बाद अपना डिरेल होना शुरू हो गया, उसका कोई आइडिया नहीं है. वो तो है. बट समीर भाई, talking about the community shield curse, you know how to break it down best. Oh yes, I have So stats, buddy. I have stats. please I have enlighten stats. us. Please enlighten us. So, and this is like I could say a warning for Arsenal fans. Yeah, but real, ठीक है ना? This is a real thing. हो सकता है like they can have another spiritual trophy in their cabinet. Who knows? ठीक है. So last 10 competitions में सिर्फ एक टीम जिसने वो कर्स ब्रेक किया है. कौन है वो? जो जिसको कर्स ब्रेक करना आता है. हम. कर्स ब्रेक करना आता है. ठीक है. फिर there are out of the remaining 9 competitions, there are only 3 teams who have won and still made it to top 4. So the chances of not making it top 4 is 60% at the moment. And also to add to this, the last 2 winners
of Community Shield have finished in 8th and 5th. Yeah. तो कर लो सेलिब्रेट जितना करना है, ठीक है। मतलब इतना पैसा खर्चा करने के बाद if the jinx engulfs you और तुमने उठा के सीधा वापस फेंक दिया पीछे जहां से तुम आए हो, Yeah. फिर तो So no, मतलब no. फिर, It's फिर so तो so कई the point कई the फिर point तो इन गई पैसे वाली भैंस पानी में आर्सेनल की बेसिकली। no, no, eventually the point कमिंग being कमिंग key, बैक टू द गेम, Community कमिंग Shield बैक टू द is गेम, not season defining result. That's the Mhm. point is No, Community it Shield has is never not been. there. It has Yep. never been. मतलब this is a mistake. अगर कोई ये सोच रहा है कि कम्युनिटी शीट से सीजन डिफाइन होगा, तो या तो वो ये उसका पहला गेम होगा फुटबॉल का, is what I believe. Also, That has never उस been the thing. लॉजिक से एटलीस्ट लेस्टर को अभी प्रीमियर लीग में होना चाहिए था। But coming back to the game, देख जितना मुझे समझ में आया कि भाई एटलीस्ट जो हम लोग प्री सीजन में हम लोग जब कम्युनिटी शील्ड से जैसे स्टार्ट करते हैं, ये इतना खराब नहीं था। I mean, I could see yeah, this is like true. a massive improvement on what we saw in the last two community shield. It's ठीक है just ना? a bad result. I mean, performance was good. I mean, I We don't were think result was bad. I'm putting it down to mostly to luck. We were Yeah, quite yeah, unlucky in the end, ठीक है ना? true. वो डिफ्लेक्शन किसी से भी हो सकता था, it could have been anyone, Yeah, it could have been yeah, Ruben Dias, it could have been anyone, that was yeah. pure unlucky। and यार पेनल्टीज में जब बात आती है तो भाई हम तो हाथ ही खड़े कर लेते हैं कि भाई मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पता तो है ही, मतलब कोई ऐसी उम्मीद तो लेके चलते नहीं है। Yeah, But overall game, it was a game of two halves. Obviously, what I feel that City were dominant in the first, I would say 20 minutes, and the last 25 minutes, yeah, somewhere in the middle, Arsenal kind of taking the game well. ठीक है। yeah. राइस बेबी से देखो, मेरे को तो खुद कोई लगा नहीं कि भाई मतलब this He guy was has to not that still step up effective, a lot. I was not effective, ठीक but है ना? okay, तो one game. यूरियन टिम, आई थिंक सो in our opponents squad में देखा है तो यूरियन टिम्बर is something that's like हाँ मतलब if Yeah, he he can impressed me a actually lot. if he He plays was good. like this, he's a threat, ठीक है। Yeah, yeah, yeah. Great. अपने में again defensively we were good, I'm not saying defensively we were solid, the problem is our lack of creativity और mainly गुंडोगन और मारेस का ना होना दिख रहा था साफ साफ कि टीम में क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है, एंड यू नीड समवन Hmm. नाउ टू फिल दैट गैप, ठीक है। आई थिंक सो दैट समथिंग, अगर अब जब जैसे 4-2 स्ट्रक्चर जो खिलाया था दैट वाज प्रीटी परफेक्ट, ठीक है ना। इवन इफ यू प्ले इन योर Yeah, प्रीमियर लीग गेम्स एज वेल यार, वो प्रॉपर एक एकदम सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा कि yes. to kind of concede less goals. I can see that happening, but Yeah. we need someone who can kind of uh, be more of an attacking threat. ठीक है। Yeah. Now that's where we lacking because गुंडोगन और महारेस के जाने से एक्सपीरियंस नहीं गया है, उनका आउटपुट भी गया है। उनका जो you basically gave up around 45 to 50 GNA, which matters in Yep. games like this, ठीक है। Yes, और yes, जब yes. अभी एंड इन द डे जब अभी की ये जो नया रूल आ रहा है, आ क्या रहा है, मतलब आ ही गया दैट होल टाइम स्टॉपेज वाला Extra रूल time. जो है, Yeah. जहाँ पे मतलब अभी गेम्स 120 मिनट के भी हो सकते हैं, लाइक अभी टाइम्स पे अभी फुटबॉल का कोई टाइम नहीं रहा है, मतलब अभी जो है वो है, ठीक है। एंड ऑल्सो देखा जाए तो मुझे 8 मिनट वाला समझ नहीं है, लाइक कोई टाइम वेस्टिंग हुई नहीं है इतनी, ठीक है Compared ना। to like, गोल्स एक गया है, मुझे मतलब वो लगता था कि बहुत ऐसा लगता था कि मतलब कुछ समझ ना आ रहा हो तो भाई 8 मिनट का मतलब बेर मिनिमम टाइम डाल दिया, ठीक है। तो we were not that bad as we yeah. were in last two community shields, ठीक है ना। तो True, true, true. I think so, or with the season, like because we finished our season a month later than Arsenal, we had basically we had 3 pre-season games, they have 5, ठीक है। they had a lot Yeah, of time to prepare, और प्लस उनके reinforcements आ गए हैं जो उन्हें चाहिए, like their squad is yeah. stacked, like आर्सेनल अगर अभी भी रो रही हो ना कि भाई हमारा स्क्वाड में ये नहीं है वो नहीं है, तो डूब जाओ यार तुम लोग, मतलब सही में डूब के मर जाओ ना कहीं जाके फिर तुम लोग, मतलब they are literally stacked, ठीक Yeah. है। they are They stacked spent a now, good so amount. 200 million के ऊपर they spend किया came है भाई. they came with a full force। उनके departures apart from Xhaka, I don't remember कोई departures apart from Xhaka हुआ है क्या, जो उनका कोई मतलब जिनका उन्होंने Key player तो I don't रिप्लेसमेंट remember. ढूंढा है, Yeah. ठीक है। तो वो जैसे हम लोग के की मेंबर्स गए हैं, लाइक बहुत ही Yep. पिवटल मेंबर्स Integral. गए हैं,
इंटीग्रल भाई, कैप्टन गया है भाई. एग्जैक्टली, कैप्टन गया, Yeah, राइट, एग्जैक्टली राइट. तो yeah, हम लोग का जो स्क्वाड देखा जाए तो देख, उनका स्क्वाड ऑन अ पेपर उनका स्क्वाड थोड़ा मतलब बैलेंस है, मतलब उनकी स्क्वाड में कि भाई वो yeah, लाइक जीत भी जाता, आई वोंट बी जीत जाते तो आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज द स्क्वाड वाज प्रेजेंट टू काइंड ऑफ हैंडल सिचुएशन लाइक दिस. एंड yeah, आल्सो बहुत बेसिक बोलूं ना तो भाई तुमने ड्रॉ करवाया है मैच, यू वन ऑन पेनल्टीज, ठीक है ना, यू ड्रू द मैच. yeah. तो एक तो तुमने जीता वैसे नहीं है, तुमने सिर्फ ड्रॉ करा एंड यू टुक द You गेम टू got a result. पेनल्टीज एंड यू Yeah, that वन, is. या. और भाई पेनल्टीज इज डाउन टू प्योर, मतलब वो भाई मतलब वो तो वैसे भी यू कुड से देयर कुड बी 50-50 चांस, यहाँ कार वहाँ आर या पार वाली बात थी. Yeah, सो काम डाउन, यू ड्रू द गेम, ठीक है. तुमको वो हमसे लग रहा था कि हमसे मेंटल ब्लॉक हट गया है, वी कैन डिफीट सिटी, पहले तुमने तो हराया भी नहीं है, यू जस्ट ड्रू द गेम. yeah. No, no, no. I completely agree. Even एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं गया मैच, एक्स्ट्रा टाइम का अगर प्रिंसिपल होता तो हो सकता था थिंग्स कुड हैव फॉलन इन आवर फेवर. yes, it's it's just like a result that was not in our favor. I mean, या performance यू wise, यू so performance calm down, was. you drew the game, relax, chill. I mean, मतलब even don't have to like be not hyped even up. I won't even say like we battered out at them. Like it was even game. I mean, they had their chances. I mean, they also played decent. We also played decent. It was just run off the play में अपना goal हो गया था. So I mean, it was a 50-50 game and we were leading 1-0. ऐसा था मेरे लिए एक point पे. Eventually they got a deflected goal. वो सब ठीक है, but ठीक है. Eventually result अपना नहीं है. But we move on. But let's look at the positives. And one big positive I saw and I was very impressed by this guy, Mateo Kovacic. By first half में बंदा जो मुझे इतना पसंद आया है, जो द वे ही वाज प्लेइंग डबल पिवट, द वे ही वाज कॉम्प्लीमेंटिंग रॉड्री, आई लाइक्ड इट टू मच. ऑब्वियसली सिटी फैंस don't expect him to be in the box like Gundogan was, don't expect him to score as many goals, but जिस तरह से वो भाई बॉल रख रहा था, ट्रांजिशन में हेल्प कर रहा था, तो आई थिंक इट कुड बी समथिंग न्यू. तो एज यू सेड कि थ्री मैन बैक और वो दो जब का रहेगा एज अपना फॉर्मेशन, it could make sense कि we won't concede more goals. And to be fair, I think in first half अगर हमारे पास KD भी होता, that one creative player with those two midfielder, I think that game would have been different. So what do you make Tanmay bhai of Kovacic's performance? Because I was heavily impressed with him because मुझे तो लगा भाई this is something new that we are getting in the team. कोवाचिच का यार ये था कि he was making a lot of He lost a man. yeah, I'm here. मैं वही कह रहा था कि कोवाचिच he was making a lot of forward runs and Yeah, जैसे जो अपना the whole play that we have is like even if we're making forward runs we don't usually rely on solo forward runs. We try to pass the ball forward and then make the players run. But Kovacic का क्या था कि वो अकेले बॉल लेके जा रहा था. Again, it's a very daring step from him. But yeah, उसमें maybe it'll take time for him to like adjust to Pep style. अभी तो आया है and everything. Now, given his defensive ability, obviously he's agile, he's fast, he's physical, so he's adding to the team. अब I don't believe him to be कि हाँ you have to be exactly same as Gundogan or you have to prove yourself, but you have your own identity. तो yeah. वही बात है कि he played good yesterday. Some factors were not Pep like, but अब हर फैक्टर पे तो यार इतना वो करना सही नहीं. Yeah, it was different than what we used to see from like a number eight type of midfielder, what Gundogan and Bernardo used to do in eight. But it was refreshing to see, and I kind of liked it. What about you, Samir bhai? Because one thing I noticed about like having Kovacic was कि Rodri was playing with more freedom. Rodri was like कि थोड़ा और आगे जा रहा था. Rodri को एक अलग dimension मिल रहा था. So do you think Pep kind of using it more often and using both players in certain situations? What do you think? I mean, for me, see, I might have a slightly different opinion on that. That I find Kovacic pretty average on a holistic because I mean he's doing what he does the best. He carries the ball forward. He retains the ball and goes into your final third and he kind of beats the Yeah, press. But the problem is that when he has to execute an action of where to yeah. pass and he was very poor on that. And that is the Agreed, same agreed. problem he used to face in Chelsea as well. Okay, डायरेक्ट पासेस में उसको इशू हो रहा था. आई एग्री. correct. So the thing is that so that's where he has to massively improve in it. I
I rate Kovacic defensively higher than Gundogan. Okay, I was quite less confident whenever I see Gundogan in double pivot. Hmm. Then I'm seeing Kovacic over there. But also the fact that because if he kind of learns that whole finishing thing and what he has to his decision making in final third and what he has to do with passes and everything, I think so we can see a player in making that can kind of go to the same path that Gundogan walked for 6 years in making, and then what we saw post 2018-19 season, that a player Yeah. what he turned in those 2 years exactly, right? So I think so. There is a player over there, but uh, I mean, he has. It will take a lot of time for reach to reach that levels, or maybe not. Maybe he chart a different part altogether. Or Yeah. as even we spoke last time as well that normally we don't look for players who are like a like to like replacement of Gundogan, because Correct. Mm. the way these players have transformed over 6 years, be it your Gundogan, be or even Mahrez and all, you won't find those players because those players were made over here. Yeah. When they came, they were someone else. Over 6 years, they became completely different from what they were expected to be. So Yes. Kovacic, as of now, I see him like someone who kind of like is a backup solution, because I think our first preference in double pivot would be Stones and Rodri generally. Yeah. But with the season, with the amount of games that we have in this season, I think so it will he'll get his fair share of games. Second, so I see that I see a ray of hope over there. I see someone who's kind of adapting to what Pep is trying to do with him, and it has been a month for to kind of be into that school. So I don't expect Hmm. much, obviously, but he held well. I think so. He kind of took on many of Arsenal's players, and Yeah. आई थिंक आर्सेनल वाले अभी भी वो ओडेगार्ड का क्लिप रिपीट कर रहे हैं कि ओडेगार्ड kind of did that, but then he came back and he repaid that whole thing and he kind Yeah. of made a fool out of him. So like there is a what you could say a player over there who can reach into the heights where City kind of considers a player as an elite level of player. So I think so I'm quite hopeful towards him. I see that we could see what Mateo Kovacic actually is Yeah. when he reaches that high ceiling. Not in this Yes. season, but in further seasons. But True. overall, I'm not too impressed, but I'm not too disheartened. I have like a very have mixed responses, but the signs are there, and I You am can hope quite for some. I'm very interested to see where this Very thing true. where Yeah. Kovacic heads in his career as a City player. Also, in like a midfield, there is how good it is to see Kevin De Bruyne in the lineup, like in a playing, in City playing lineup. Because जो हमने पढ़ा था after like Champions League कुछ 2 हफ्ते बाद कि Hamstring, hamstring he पड़ could गया miss था. Mm. 1 or 2 months of football. So what Hmm. a big boost is it like to see him be ready. I'm not sure if he'll directly straight jump into the first team, but Tanmay bhai how because वो जब आया बेंच से he was the one Hmm. influential, right? मतलब गोल के लिए भी he उसने had played his उसने part. ही पामर के गोल के लिए भी उसने ही असिस्ट दिया था। Exactly. So वो like बहुत I've वियर्ड been too बहुत dependent वियर्ड on that हेडर guy. था, किसी ने नोटिस किया? बहुत अजीब सा हाँ, हेडर था भाई वो. बहुत अजीब I header था. remember a game exactly like this. ये 2020 का नहीं 21 का गेम था, and it was that game which started our momentum, the Chelsea game at Bridge uh, 3-1. Bridge, bridge, Yeah, Stamford yeah, Bridge, yeah. हाँ, 3-1. Stamford Yep. Bridge game। मेरे को ध्यान है जो अपना पहला गोल हुआ था, नॉट द गुंडोगन वन, उसके बाद वाला एक गोल था। Foden Foden ने जो मारा था that pass from हाँ, KDB. हाँ, Yep. तो उसका मेरे को ध्यान है कि देयर वाज वन इन उसी प्ले में, तो सो आई रिमेम्बर चेल्सी के किसी प्लेयर ने बॉल अपने हाफ में मारने की कोशिश करी थी, एंड De Bruyne ने एक हेडर मारा था जो सीधा उनके बॉक्स से पहले जाके रुका था, स्टर्लिंग भाग के गया था, एंड आई थिंक उसका वो चांस मिस हो गया। सो इट 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 वाज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन कम्युनिटी शील्ड आल्सो यस्टरडे, कि भाई हाथ पैर छोड़ो, वो अपने सिर से भी असिस्ट दे सकता है।
बात रही स्टर्लिंग की, तो यार वो कभी चांस मिस करना was more common than scoring for him या at the end of his बहुत City बहुत देख time. चुके हैं हम. हाँ. ठीक है, वो अब अब वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है भाई, अब वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है। So yeah, and also on अब the वो Foden किसी side, और की अमानत है। also also we saw Foden in midfield, and Foden even for the goal जो Foden ने पीछे से लाया. So do we see him more as a midfield player? Do you expect him to be more of a midfield player this season than a winger? Because उसका I am seeing more of a role in midfield side. So, I mean, I think so. This was in making for a very long time when Pep used to kind of started to give hints in press conference that I'm kind of looking forward to have Foden as a number eight, right on the right side as a right side number eight and all. But I mean, till the time we don't get a winger, I would probably want to see him more as a wide player. Till the time we don't get a winger, because he's more creative than Bernardo is what I believe in. He's more creative than him, and even in that goal that we saw in the Palmer goal, okay, that he made that half turn and he kind of drove the Yeah, ball right across the like he pitch did in and the Champions League final. exactly. Yeah, But way that he needs to get back to his roots where he used to finish with the chances that he used to get. So yeah. that's That was a that's very some horrible miss that he will have. yeah, I that was expect him to finish. Expect him to I finish. even I did even I kind of I was a bit shocked when I saw that कि यार Yeah, ये कैसे I चला mean गया. Sterling जाके हमें टाइम हो गया भाई अभी फोर्डन तू ऐसा मत कर ब्रो. I was like that. So I mean this is the season that we all have been waiting for with respect to Foden, is what I can say. Yeah, This is the season, okay. Uh, but again, I think so. There are some things that he kind have to up the step. कि भाई no, this is my time. Okay, last season I have been in and out of the squad, but now the space is over there to kind of take the center stage and do my thing. So yeah, I think so. The lot of our success in this season also rests on his shoulders, as yeah. uh, as others as well. And केडीबी की बात करो तो भाई ट्रेबल बोनस से मेडिकल टीम को तो अच्छा दिया होना चाहिए. बिकॉज उस आदमी को 6 हफ्ते पहले फास्ट ट्रैक कर दिया यार. Because True. initially the all the conversation and rumors were around that he might come in mid September, Yeah, early to mid September end September. October start ऐसा कुछ तो था भाई. Yeah, He was true. training in pre-season that Atletico वाला Exactly. I game was था. surprised. Dude, I saw him on the plane to Japan. I was like, जापान क्यों जा रहा है भाई बंदा? ये तो वो injured है. ठीक है, जापान जाए वो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट वो इवन that he is hitting that volleys when in the training Atletico Yeah. वाले गेम में. Yes, 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 yes. I like तो like if anyone says that कि यार इंजरी है, जैसे इवन suppose माइकल ओलिस वाला थिंग इज आपने कि अरे इंजरी है Hmm. कैसे होगा. हम ठीक कर हमारे हमारा मेडिकल टीम ठीक करवा देगा, तुम वो टेंशन मत लो. दे हैंडल दिस. ठीक है. Yeah, yeah. वो मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ होता रहता है भाई. दे हैव उनके लेबोरेटरी में है चीजें, टेंशन मत लो. तो Crazy. and having KDB at the start of the season, okay, is very crucial. Like I think so. Yep. This season, and in the previous season, the whole notion was that the city starts very slow, okay, and then they kind of heat up in the second half of the season. I think so. By this it won't. I don't reckon that it would be a slow start. I think so. There will be, because the I think till October we have like fairly decent games. We're not having a Yes. big game till October, right? I think so. Yeah. I mean, October. second is Newcastle, but हाँ, that's in न्यूकासल, one सॉरी, month. न्यूकासल. भाई Technical, but that's in tier. So I mean, I think we should be आजकल okay. भाई न्यूकासल थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट तो ऐसा नहीं है. हाँ, fair, ठीक है. fair. तो न्यूकासल को भी जी बोल के बोलना पड़ता है, ठीक है. तो so basically what I was saying that having the entire squad barring Ake, and who else is injured? Is anyone injured apart from Ake? Is anyone injured? I don't think anyone else. Ake injured है ना सिर्फ. आके injured है सिर्फ. Defense में तो सब है, midfield में सब है. Yeah, हाँ तो unless Phillips is injured like he always is. नहीं फिलिप्स इंजर्ड नहीं है, बट अगेन यार मतलब सॉरी यार, फिलिप्स पे तो भाई अलग अलग ही उसका तो सेगमेंट बनेगा. मतलब आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम राइट नाउ बिकॉज़ आई फील लिटिल बैड फॉर हिम नाउ.
जो Yeah, उसका जैसा कुछ उसका कुछ नहीं अभी करता. उसका ऑर्डर जो मतलब खिसकता चला गया है अभी. एवरी मंथ इज But लाइक अ डैगर फॉर हिम. कि जो भी प्लेयर ला रहे हैं वो सब इन्वर्टेड लेफ्ट बैक है, राइट बैक इन्वर्टेड राइट बैक भी घुस गए हैं, लेफ्ट बैक गार्डियोल भी घुस गया. मतलब उसका तो कोई मुश्किल कहाँ है. चले But क्या, बहुत let's मुश्किल है. hope. But like on there is one player जो थोड़ा like rumored to go out and yeah. But do you think that goal that he scored that changes his future at Man City? Or do you think on Cole Palmer? Do you think उस गोल से उतना डिफरेंस क्रिएट कुछ होगा? So regarding Cole Palmer, I mean, it's been out. I've heard that first of all, Juan Malilo is back as Pep's assistant Yeah. manager, and I think so. Somewhere it's written that in I guess it's Athletic or somewhere it's written that Juan Malilo was very close to Cole Palmer, and uh, now since he's back, okay, that might work in his favor as well as a like your backup right winger option if not a first is not the first choice. Mm-hmm. And but again the point is that these players like Palmer, McCarthy, these players need games, Yes. and whether they're able to get that at City, that's where the question lies. मतलब Yes. कोल पामर ने तो भाई चैंपियंस लीग में भी गोल मारा है. मतलब ये नहीं है कि मतलब वी कैन जस्ट Yeah. काइंड ऑफ मेक दिस एज अ केस फॉर हिम. ठीक है. No doubt he works really hard. He always, whenever I have seen him on the pitch, he always have that energy that I want to prove with every opportunity that I've got that I have got what it takes to be in this team. And that's a really good Yes. attitude. I really like in a player who kind of projects that on the pitch. But the Yeah. problem is that the team at this stage is at such an elite level that whether you can break into the team and take minutes out of those your first choice 11 or first choice 14 or 13, whoever are first 13 14 players, can you take those minutes from them? That's where the thing lies. But I believe that out of the four, the quartet in Palmer, McCarthy, Bob, and Perun, I think दो तो या दो दो का निकाला लग रहा है मेरे को. या तो लोन पे जाए या फिर परमानेंट, मतलब कहीं ना कहीं तो हो गए. एंड आई थिंक सो पामर के लिए ऑफर्स भी बहुत है. He's not short of offers, and even Guardiola in his press conference have kind of also made it clear that we really want him. But if basically he kind of says that the decision is in his hands. If he sees that he wants to continue somewhere else, then we won't stop him. So it's basically like now the way he wants his squad is very important, and especially when I'm saying that this new rule regarding the whole time wasting thing and all, you need kind of a depth. So that because Yeah. injuries होगी, इंजरी I'm हो सकती like है वो. इंजरी हाँ हो सकती है और शायद होगी भी. like थोड़ा When अभी you रिसेंटली play Everton and teams like Everton or like the tough team when you Wolves play and all. Everton, when you play Brentford, when you play like quite physical teams, like let's say Yeah, Liverpool, yeah, it's yeah. quite physical and everything. The problem Correct. होगी. होगी So होगी at definitely. that point, whom because and again, all of these players they want minutes. They cannot sit the entire season on the bench. So Palmer, highly talented, as much as we really want him to chip because that was the plan. अगर देखा जाए तो like last season, in the beginning of the last season, that was the whole thing that they kind of see him as next in line to take that right winger position. बट फिर एक साल में जो क्लब का जो किस्मत बदला है, so now the standards are different. It's not the same True. that it was earlier. The standards are different. Yeah. Okay, because Yeah. Guardiola has kind of made it very clear that after winning Champions League, he has seen team drop off massively, and I do not want Manchester City to face the same fate that other teams have faced. So now the expectations are different. Yep. The requirements from every player is different. Okay, Yeah. the stance बदल गया है अभी. So would Yeah. do they see Palmer in that frame? So अभी से लेके end of the window is where the whole Palmer conundrum will kind of fall, that where they see him continuing. Because अगर एक वही अगर लोन मूव भी देखा जाए तो अच्छा होगा, but then if you're signing someone younger,
देन वो तो वैसे ही फिर ब्रेक नहीं उसका करता है। मुश्किल हो जाएगा, या ट्रू। एग्जैक्टली सो और प्लस अभी की डेट में अगेन व्हेन यू हैव मारेज का आउटपुट पामर रेप्लिकेट कर दे, दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज क्वाइट डाइसी. Yeah, So there's a lot of obviously. ifs and buts. There's also ifs and buts in his case and in other three cases as well. Yeah. So I mean, 31st August is when we'll find out क्या होगा, Exactly, exactly, when he'll exactly. play. But yeah, we'll see. I mean, if you would like to add anything, Tanmay bhai, because you even I had like same concerns like you had, because I believe like मुझे तो लगता है कि he's a very talented player, but sometimes he's very selfish because he doesn't pass very quickly and all. But if you are selfish at right wing and you do that, then who is to complain? Because eventually he will end up scored a worldie in like a community shield game. So what would you like to add to what Samit said? That reminds me Yeah. of Mahrez as well. Na? That whole goal, Yeah. that whole Yep. shot, that हम्म, kind of like a Mahrez. ये पामर का I guess वही है कि now like how Foden was slowly integrated in the team. We saw his first proper involvement in the Community Shield in 2019 जब 19. Yep. अगुएरो ने दो गोल गोल मारे मारा थे था चेल्सी को. हाँ. Yep. हम्म. So I feel it's kind of like the rite of passage for Palmer also, but it depends on how much he capitalizes on that. Foden ने capitalize किया, and that guy is now a mainstay in the team. He's Correct. practically I Star think the boy. most important British player in our team. Yep. If uh, One of the Stones, most, yeah, one of the most. Stones or him, either of him or Stones are the most important British players in the team. But वही है कि for Palmer to reach that level, he'll have to work hard. He'll have to basically impress Pep. Now, बाकी सब जाए भाड़ में, पेप को इम्प्रेस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है. Yep. अब तुम अगर पेप को इम्प्रेस कर दोगे तो पेप will go out of his way to Correct. keep you in the team. He did the same with Grealish. Grealish Yeah. delivered. He did the same with Akanji. Akanji delivered. So at the end it'll come to how much he is willing to put on the field in order to be in the City team. He, there is no harm in him going for a loan this season. Obviously, he'll get more playing time. He'll develop better as a player. But if Pep believes कि हाँ, if we don't end up signing a winger replacement and if we have to make do with what we have, then keeping Palmer and developing him into a proper player, if not to the level of Mahrez, maybe just almost to the level of Mahrez, then yeah, what's the harm in it? Yeah. बट Yeah. वही पामर के Agree. ऊपर है कि पामर कितना मेंटालिटी रखता है एंड कितना वो उस पे एक्ट करता है बिकॉज सम पीपल who come from the academy they don't tend to they always tend to have that favoritism or tend to have this ideology in their heads कि यार हम तो एकेडमी से ही हैं हमें खेलने को मिल ही जाएगा. Yeah. Mentality, that would be a question. Yeah, definitely. And to be For fair, one like to play in Pep's team, for one to play in Pep's team, they should know that they are never yeah, permanent, no matter how good they are. exactly. Yeah, Especially yeah, पेप 100%. अभी उस चाहे बंदे तो ने. हालैंड को भी बेंच कर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है. You True. basically True. it's an unspoken rule that you cannot ask that how much game time I'll get in your team. You cannot ask Yeah, him ever. exactly. Yep. तुम्हें Yep. चाहे 5 मिनट का भी गेम टाइम मिले पर वो 5 मिनट में तुम्हें इतना करना है कि भाई भाई अगले अगले 15 मिनट के लिए तुम्हें मिल जाए फिर तुम अपने 20 मिनट विकी फिर एक. तुम अपने विकिपीडिया में ऑनर सेक्शन में डाल सकते हो कि मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है उसने खेलने के लिए. अब if we have to take a prime example, if we have to take a prime example and a very recent example, शेयर after the चांस. whole Cancelo saga, Rico Lewis को देख लो यार. That guy is 17. Yeah, That Yes. guy is 17. He has won the treble. He has been a crucial part of our Premier League campaign. He scored in the Champions League, or Yep. and he's Sevilla. proving himself on the field. He's not age is not a factor for him. वो तो भाई जहाँ उसे चांस मिल रहा है जितना भी चांस मिल रहा है वो उसमें प्रूव कर रहा है. Correct. आई Correct. रिमेम्बर जब उसने
एक बायर्न के बहुत अगेंस्ट प्री सीजन में किया मुश्किल था भाई। नहीं बायन वाला नहीं जो the Tottenham game that we played in Etihad Yes. में जो 4-2. उसका जो रन ब्लॉक था था ऊपर। या Yes. एग्जैक्टली सो he's proving himself he's like ठीक है भाई मेरे को चाहे 5 मिनट 10 मिनट भी मिले पर वो 5-10 मिनट में ऐसे खेलूंगा कि मेरे को मैनेजर अगले मैच के लिए कंसिडर करेगा ही Correct. Correct. Talking about Rico Lewis, so when he was brought in that Bayern game in हम्म that preseason, I think so. No one even knew, even to those who kind of track the developments that happens, no one knew. I Yeah. Okay, don't think so anyone who doesn't follow the no one academy like knows I Rico remember. Lewis. याद है हम लोग सिटी प्लस पे देख रहे थे, डॉग टूर में देख रहे हम्म थे उसमें, टॉकिंग अबाउट हम्म इट यार ये कौन है, ठीक है, एंड दिस वाज हम्म एंड ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पेप, ऐसा नहीं लाइक ही वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय पेप एंड ही काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड हिम इन द स्क्वाड, ठीक है, And I एंड feel, इवन I feel कि बिफोर Rico दैट is the next guinea pig of that. आई मीन He could be. He could be. नेक्स्ट नहीं है, करंट है भाई, वो नेक्स्ट नहीं है, वो करंट गिनी पिग है मतलब उसका। current और current इसको guinea pig of उसको that. ये उसको एडवांस एटलेटिको नहीं, सॉरी बायर्न के गेम में एडवांस 8 खिलाया है Bayern भाई। game में bro advance है seriously. मैं उससे ज्यादा बोला और क्या ब्रो प्रूफ चाहिए तुझे कि अभी आज का गिनी एडविन को पिग बिठा वही रहा है है क्या उसका। अभी जिस तरह से आगे भाग नहीं, रहा और है वो बंदा. उसने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी इंटरव्यू में कहा था दैट रिको कैन प्ले एनीवेयर, he can play he can he's not just a defender, he can play even advance it as well. When a manager Yeah. is very outspoken about it, so that shows that, that's why I'm His saying ना कि भाई confidence. मिडफील्डर His trust. मिडफील्डर में बैकअप ऑप्शंस इस बार अच्छा है, डेप्थ है, Hmm. मेन प्रॉब्लम अपना विंग्स है, एंड ऑल्सो कहीं बार तो रिको और द होल कैंसेलो का जो बर्स्ट आउट का सीन था, आई थिंक सो when he was benched for Rico, that's where this whole the whole sludge come out of Cancelo की area अब तो जाना है, so that और also that shows that even then he can, अगर उसके tactical shifts में Rico fit होता है तो भाई even though you have wealth of experience, it doesn't matter to me. Whatever Rico is offering on the pitch Hmm. to suit my tactics, I'll prefer that over your experience anyway. If you're not fitting into what I in the way I want to play, I want my team to play. Correct. Correct. So that's why. And by the I think so. Rico का जो नया contract, which he has agreed recently, he's getting a 6-year contract with wages been up by more than 5 times. Hmm. So this shows not only that Pep is trusting it, even the board is kind of in sync with what Pep feels Sees him about the as a player. future. Like they Yes. really want him. They really want him. Like this player is the one that they look for the future. Yep. One of the players. तो ये फ्यूचर के लिए एक अभी का इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आई थिंक सो इवन इन दैट होल heavy Coca stream that there were many offers for Rico. Like a dozen offers came for Rico from various clubs uh, within the country and out within England and outside England. So, the, I mean, evading all those offers and keeping him and giving him a new contract and kind of making him as your first team squad player before him Yes. turning 18, that shows what So इसका the सीलिंग कितना कितना ज्यादा है भाई, मतलब Hmm. इन आगे के कुछ सालों में हो 17. सकता है काइंड ऑफ, या 17 राइट, 17 और 2004 2004 का इसका मतलब 2004 या 5 का बंदा है वो. शिट. My God. तो 18 और That feels 19 फेली लाइक। that feels so old, मैं man. मैं मैं I मैं feel so 25 साल की उम्र में क्या कर रहा हूँ नहीं, that मैं feels so old. सवाल नहीं पूछूंगा, ये सब सवाल नहीं पूछा जाता ऑन ऑन स्क्रीन में भाई, नहीं But ये like फेस पे आने नहीं चाहिए सब सवाल। coming just back on Palmer, I think like अगर Pep, the way you said कि उसका mentality is where he'll वो पूरा बात उस पे आएगा. I think and I think he's a नहीं talented player. अभी He should. अभी उससे ना अभी इतनी यंग एज में एक्सपेक्ट करना कि वो बिल्कुल ही मेंटली मैच्योर होगा दैट इज आल्सो अ बिग आस्क कि Yeah. यू एक्सपेक्ट कि हाँ ही एक्ट्स लाइक गुंडोगन ऑन द पिच और समथिंग अभी से ही ठीक है वी डोंट एक्सपेक्ट दैट मच आउट ऑफ हिम ही इज ओनली 21 बट द होल पॉइंट इज कि now in this new age of football where people have to break into the teams at a young age in order to gain some recognition he also has to realize the fact that I can't just take it for granted for Yeah. how much of it I want.
I will have to prove myself if I need to be a part of this team. And to be fair, I think he has to prove in City only more because I don't remember, like you guys please correct me कि कोई City का player loan पे गया है और वो वापस आके City के लिए break through किया है. Like we had hopes जिनचेंको, from like Delap and all. Zinchenko though it's a जिनचेंको, different breed. Zinchenko is not academy आई player. मीन Like on the fence जिनचेंको side. के बाद किसने नहीं किया? I'm talking about the academy player, like जो academy से नहीं, गया अकेडमी है तो नहीं किया. and आया है. You can kind of think like Lavia in that bracket, but वो अब तक आया नहीं है, which we could think in next year. But उसके अलावा there is One who no probably academy लाविया player. had लाविया one लोन पे who किधर गया था? लाविया I'm लोन saying पे कहाँ was now we can think Southampton. if we are bringing हाँ. him back, the one academy उसे player. हम साउथहैम्पटन को हम लोन मूव मान रहे हैं क्या? No, I'm saying कि academy player who अब went Lonely out move and did है, something, वो who came loan back to move ही City. है. It's kind of it's Southampton 40 से 40 million का loan, we can say that. But that's my point is कि कोई academy player जो बाहर गया है भाई भाई City में आके 14 किया मिलियन ही दिए उसने, 40 नहीं. है. कम से कम भाई तो 14 और वो 40 से बहुत फर्क होता है. I think एक ही player है. I won't even say breakout. I would say कि जो एक player जो मे बी सिटी छोड़ के वापस आया हो, एंजेलिनो. and then Angelino. Angelino मैं बोल रहा था, but he didn't break, like he was not a long time success like expected जो हम कर रहे थे, but ठीक है. एक सेकेंड, At least we एक tried. सेकेंड. एरिक हम्म. गार्सिया भी तो था जो एकेडमी से गया था ऊपर. एरिक गार्सिया भी तो आया था. पर कहाँ घूमने ऊपर गया था वो? ऊपर वो ऊपर 6 महीने के लिए गया था और नीचे भी 6 महीने हाँ, बाद आ गया वो. पर रोड ये पे वो घूमने जब तो थोड़ी गया था वो. the ही time फॉलोड when द ट्रेल. ही when इज he गुड. signed for he said बार्सिलोना. that he won't extend his contract. Yeah, वो तो भाई बन. He won't sign a new contract. And I think that was what, 2 or 3 days before the Madrid game. या या हम्म. 2 days. जब अपना वो यूएफए वाली रूलिंग भी आई थी, उसी के 1-2 दिन पहले ही तो आया था कि गार्सिया Yeah, साइन नहीं करेगा. 2019. Yeah. That और फिर which is. फिर एडरसन ने अपना भड़ास निकाली थी उसके आर्सेनल गेम में उसके अगेंस्ट. Knocked कूद him गया out. था उसने बिछा knock था him एरिक out. गार्सिया Yeah. बट यू नो, मिसाइल बात चले भाई. भाई एडरसन का कुछ भी हो, ऑर्टेगा आने से एडरसन पे जो प्रेशर आया ना, Yes. यू चुल नो. बुझ गई एडरसन को, चुल भाई मची है. भाई एडरसन, ऑर्टेगा को जिस पर्पस पे साइन किया था भाई, पर्पस तो हो गया कि भाई एडरसन पे प्रेशर डालना जरूरी था. बिकॉज यू कुड सी एट सम पॉइंट ही वाज गेटिंग रियली लाइक रिलैक्स कि भाई, क्योंकि उसको डिस्प्लेस करने वाला था कौन? जैक True. स्टेफन को एक गेम दिया था वो लिवरपूल वाला गेम. उस गेम के बाद भाई उसका देश वो भी निकाला तो करके. था. वो भी तो गेम था दैट चेल्सी एफए कप सेमीफाइनल जिसमें वो लाइन के आगे आगे आ गया Back था एंड pass. देन. हाँ. Yeah. एक तो उसको तो चेल्सी गेम में बैक पास पकड़ लिया था. I think in all our secondary keepers that have been here since Pep, I think the best secondary keeper that we've ever had, other than probably Ortega, is Muric. जो बंदा पेनल्टी रोकता था, अगर काबायरो हम भी अच्छा था. पेनल्टी में गए. हाँ. काबायरो भी अच्छा था, विली काबायरो. काबारेरो अच्छा था यार, बट But लाइक ही वाज Caballero, वेरी by the Caballero first काबायरो choice था. काबारेरो. काबायरो Caballero काबायरो का first choice इधर था वो. भाई because Bravo second choice बन गया था. Caballero first choice था भाई. हाँ, एक पॉइंट तो हाँ, Penalty corrective. ये हो Penalty गया था. corrective. ये हो गया नहीं, था. बट तो जो जो म्यूरिच, जब भी हम पेनल्टी शूटआउट में जाते थे एंड अगर Yeah. म्यूरिच होता No, था bro. तो कोई डर नहीं रहता था, तब कोई डर नहीं रहता था तब. Even Bravo हाँ. in the second season, उसने भी भाई अपना जो सेंचुरी बाय द सीजन में वे, जो पेनल्टी जिताया था. म्यूरिच लेस्टर भाई वुल्स वाला म्यूरिच मैच. म्यूरिच बर्नली में शायद थर्ड चॉइस है या फोर्थ चॉइस, आई डोंट रिमेम्बर कि वो शायद बर्नली में थर्ड या फोर्थ चॉइस है भाई अभी फिलहाल. क्योंकि बर्नली ने 2 कीपर साइन किए हैं अभी. उसका तो कोई उसका कन्विक्शन नहीं हो गया था म्यूरिच का. That's नहीं डिड ही उसकी, गेट कन्विक्टेड विद समथिंग? नहीं भाई, ऐसा कुछ होता तो पता तो चलता. नहीं, कुछ था तो यार, इसका कुछ कांड तो हुआ था इफ आई रिमेम्बर प्रिजन करेक्ट. to see. प्रिजन That's एफसी अभी अप्रोच करने नहीं आई है उसको. प्रिजन एफसी की no. अभी कोई So नेगोशिएशन नहीं है. that's where my point is कि जो भी सिटी से प्लेयर निकलता है वो not sure academy player जो वही करता है. That's why I want Palmer to stay and be mark his stay like रहे भाई सिटी में करे कोई अच्छा और hopefully he had a good future. But like wrapping up on this community shield preview, कोई भाई last comment on Arsenal fans or the we won it all team because उन्होंने तो राइस ले लिया, उनको प्लेट चाहिए था तो हमने प्लेट भी दे दिया उनको. तो आई मीन आई थिंक दे हैव अ गुड डिनर. अब आपकी तरफ से कोई लास्ट रिमार्क, एनी बेस्ट विशेस फॉर द सीजन?
चलो उनके पास कल को कुछ नहीं जीते तो बोलेंगे कि हमने कम्युनिटी शील्ड जीतने के लिए इतना खर्चा किया है, कुछ तो किया है हमने। ट्रू ट्रू। नहीं मतलब तो क्लॉप बुक ऑफ एक्सक्यूजेस से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ मिल क्लॉप ने तो अच्छी खासी अच्छी अच्छी क्या बोलते हैं बाइबल लिख के रखी है भाई, अच्छा भगवत गीता लिख के रखा है उसने लेंगे। रेडी है उनके पास। वो हर क्लब में अवेलेबल है, बस जब जरूरत होती तब खुलती है वो किताब, वो हर क्लब में अवेलेबल है। Yeah, man. So yeah, this was like good episode. We had a good banter starting में जो banter था, it was like कुछ दिन पे मर बाय द गया वे तो बाय द वे बट आज पर एक चीज है, लाइक जस्ट एक मिनट, बट ठीक है, आई मीन अब आर्सेनल फैंस के पास चलो अगेन वही उनके लिए वो ट्रॉफी हो गई, हमारे लिए प्री सीजन फ्रेंड, एक प्री सीजन अरे फ्रेंडली हो प्रीसीजन था गया। ब्रो, प्रीसीजन मैच था प्री अपना वो सीजन तो, I था, mean that's दिस इज व्हाट यू that's कॉल अ कर्टन रेजर भाई। या कल अपना प्रीसीजन कल जाए खत्म हुआ है ब्रो, अपना फ्राइडे को एक्चुअल सीजन चालू होने वाला है, that's where we start our हाँ, season उनका and हो उसके लिए गया, भी उनका उनका हो हो गया, गया, उनका अपना चलो, उनका हो उनका गया, हो गया, अपना चलो भाई। उनका तो yeah, we'll also come back with an episode for Burnley game where we'll preview the game. We'll start like up to a preview for season. We'll also do some for a fun bit, हम थोड़ा सीजन के लिए prediction भी कर लेंगे, हमको क्या टॉप फोर क्या लगता है, ये लगता है just for a fun bit. And yeah, tomorrow we are also gonna record an episode on transfers because अभी transfer में बहुत activities हो रही है। समीर भाई हमारे इंडियन फब्रिजियो रेडी है with lot of content and all to spread, तो कल एक एपिसोड होगा, but request all the भाई viewers to share your comments, ट्यून please इन। like, subscribe, and the response that we got for the first two videos was very good, like thank you so much जो आपको support मिला है from all the fans जिन्होंने देखा है, जो all the viewers जो सिटी फैंस आए, आई डोंट थिंक कि दूसरे फैंस ने देखा है, बट जो भी सिटी फैंस देख रहे हैं उन्हें अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग लव, भाई कीप स्प्रेडिंग लव। दूसरे फैंस देखते तो अपने कमेंट्स में 115 कहीं तो दिख जाता। हाँ अब तक दिखा नहीं है, मतलब कोई देखा नहीं अब है। दिखा नहीं तो नहीं that दिखा। that shows so yeah so अभी please अपना please guys। अभी अपना कमेंट सेक्शन बचा हुआ है इस चीज से। Yeah, one day we'll see, तो पता चल जाएगा क्या सीन है, but yeah, वी thank विल you बी so much guys। वी विल बी हियर वी विल बी हियर We will be here, we will be here। वी विल बी हियर Yeah, more than you believe। मोर देन यू so बिलीव, so thank you so much, More thank than मोर देन मोर देन यू thank you बिलीव। thank you समीर भाई, thank you तन्मय भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। बॉयज इन ब्लू साइनिंग ऑफ, कम ऑन सिटी। सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। जय हिंद।